Professor Dr. Khan Sahab, my colleagues and dear students. It is indeed a matter of great pleasure and honor for me to present whatever, and in front of my teachers, whatever we have learned from them. Back 32 years, we learned doing mathematics from Professor Dr. Muhammad Anwar Chowdhury to play mathematics without having the notion of a distance. There is no notion of a closeness of the two objects. And Dr. Muhammad Anwar Chowdhury Sahab taught us algebra. We played with a set. He actually made us to play with a set without having the notion of a distance. Then Professor Dr. Abdurrahim Sahab came. He taught us that to do mathematics without having the concept of the closeness and farness is not that easy. So he gave us a ground where we started playing with certain sets, certain transformations, equipped with the notion of a distance. So that was the journey, and today I'm here in front of you and in front of my teachers, and I'm presenting myself to you, and I'm going to present some concepts related to fixed point theory. Let's start with very basic undergraduate stuff. Everyone deals and familiar with the notion of equations. I think everyone can hear me. We have the notion of equations. It ranges from our daily life problems to the highly scientific trainings. We deal with equations. When equations come in mind, there are some problems related with equations, which are how to model the real life problem in the form of an equation, first thing. Once you have an equation, second thing is, can you find its solution? Yes. If you are lucky enough, you can find the solution. Then we talk about how many solutions are there. Is the solution is unique? Or there are infinitely many solutions? Or there are countably many solutions? There are uncountably many solutions? So this is the next question. Once this question is settled, then we talk about the nature of the solution, the nature of the problem we are dealing with. When we say the nature of the solutions, I simply mean that whenever you make a small change in the input, is there a significant change in the output or not? And if it is not so, so this means your solution is very much stable. But all the time, it is not possible to find the solutions, even of the problems which seems very simple problems, and it will be very difficult to find the solutions. But at the least we know that the solution exists. This is guarantee, but you cannot find the solutions in an analytic form or in a closed form. Then we go towards the approximation of the solutions, and that is what my senior and my colleague, Professor Dr. Safil, might be talking about, the approximation of the solution of the equations, which is not exactly known to us.
Then there are many questions when you talk about the approximation. How to approximate? There are different iterative schemes. My friend Dr. Athar will be talking about the iterative algorithms might be. Then there are different iterative algorithms through which you can approximate the solution of an equation. Then, yes, fine, you can use the iterative algorithm. The next question will be, if you have found the solution, how far your approximated solution is from your actual solutions which you were expecting from your model. So this is the whole story about equations and its solutions. And today I will be talking about a very simple equation, and I will be talking about its solution. But when you talk about the equations, there are two most important ingredients. One is the set. Everyone is familiar with the notion of a set. And the second most important ingredient of the equation is a transformation. What is the role of the transformation? The role of the transformation is it moves object from one place to another place. Then this is really very important, the properties of those transformations. How fine that transformation is. For instance, if you are moving one object from one place to another place and it is badly distorted, then you might not like that transformation. So you will be expecting some nice transformations which will be moving the object from one place to another place. So ingredient of my talk is these two objects. I will be taking a set, I will be taking a transformation. And when we see the transformations, then there is another question as well. There are certain transformations which take one object from the set and connect it with a great set. Let me explain it in a very simple way. For instance, if you put my name on a Google search, or Professor Dr. Muhammad Anwar Chaudhry Saab's name, you will be finding many results. You will be finding the number of publications, you will be finding the citations, you will be finding his affiliations with different universities. So what is that? This means you have given a single input and it has given you an output which consists of a different elements and which is a set basically. And if it is so, then we are talking about multi-valued mapping, or you call it a set value transformation, which basically take a single input and giving you a set as an input. So second ingredient of my talk will be set valued transformations. But before I move towards a set value transformation, I'll be simply explaining the concept which I will be needing. I don't know if everyone can see this, this board, but even if you can move to this side, it will be, might be that helpful. Actually, I requested at the start of my talk, but I couldn't fully explain. Actually, I could not convince the organizing committee to move the students to this place. I tried my best at the start of my talk, but anyhow, then I thought to make the request on my own. I think it's now okay. Let's start
جی کر لیتے ہیں سر, میں کر لیتا ہوں. Thank you. So let's start with very basic undergraduate problems. And through that very basic problem, I will be establishing some building block for my today's lecture. Very simple problem I'm going to put in front of you. Look at, we have this cage, say this is cage, and this one, this is compartment 1, that's all. These are the gates. We have this cage. Very simple problem. A rat has been trained to select a door at random when the bell is rung. There is a rat, say, sitting in compartment 1. This is, say, compartment 2. And this is, say, compartment 3. 3 compartments. Each compartment has door. Look, rat is here. This is one door. This is the second door. If rat is in compartment 2, you have 2 doors over here and 1 door. If a rat is in compartment 3, 2 doors and this one. So rat is in the cage. It has been trained to select a door at random whenever the bell is rung. What is the question? Question of interest is, over the long run, say at time t is equal to 0, you observe the rat, the bell is rung, then the rat will move from one compartment to another, bell is rung. Say, when I say time t is equal to 0, your rat was either in compartment 1, 2, or 3. But then 1. Then it moves to 2. Then it could move to 3. It can come back to 1. Then it can move to 2. Then it come back to. Question is, what percentage of time the rat spent a time in each compartment? Very basic problem. Very basic problem. So how would that question be addressed? There you need a very small mathematics, and the mathematics we learned from Professor Dr. Enver Chowdhury, that play without having the concept of a distance. Okay, so let's play. We have a vector, we call it a probability vector, P1, P2, P3, say, 3 elements. This probability vector, why do I call it a probability vector? Each element of that matrix is a positive entry, fine. When you sum, when you add all those entries, the answer is 1. So that is why I call it a probability vector, fine, one component. And what does this probability vector do? The answer is, this probability vector mentions the state of the system, for instance, and this says the probability of moving from one apartment to other, the probability, and this way. So at state 0, you can say 1, 0, 0. You are certain that rat was in the compartment 1, no possibility in compartment 2, you have one object, not many objects, one rat.
So this is the state of the system. It says the state of the system. And those who are working in applied mathematics, they know that you need something to specify the state of the system. Those who are working in quantum mechanics, they are very much familiar that in order to mention the state of the system, you need a Lebesgue integrable functions defined from -infinity to infinity. But here, in order to describe the state of the system, we only need the probability vector. So one object, please remember this thing. So I can call this a probability vector like x0, okay? Then we need an operator. As I mentioned, that we need a mapping. And here in this mapping, we have a matrix of size, say, 3 by 3. So this matrix of size 3 by 3 is termed as a stochastic matrix. Why do you call it a stochastic matrix? Because each column of a matrix is a probability vector. And each entry has its meaning. So as I'm dealing with A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. And each has its meaning. A11. A11 means what is the probability of moving from compartment 1 to compartment 1. Fine? And A21 means what is the probability of moving from apartment 1 to apartment 2. And everyone can now answer. It is not that big deal. If you are here, there are two possibilities. One, rat can go from this door, another rat can go from this door. So it is not that big deal. Knowing this first probability vector, it will be 1 over 2, 1 over 2. Relation between the rows as well. Sum of rows is also has some condition. Sum of rows of this matrix. Rows. Connected है. जी. तो क्या rows जमा करने नहीं, हम इस probability vectors अभी columns को add करने. Because you know that when we talk about the probability vector, the sum of all transitions probability is 1 totally at the end when we talk in terms of let me quickly respond. When you talk about the probability measure, its first condition is whenever it will be acting on the sample space, it will be giving you answer equal to 1. So that is why we are keeping in mind we are. Anyhow, so once this is done, now I'm okay. Everything is fine. Very quickly, I can construct this matrix. 0, 1 over 2, 1 over 2, 1 over 3, 0, 2 over 3, 1 over 3, 2 over 3, 0. This is my matrix. Very simple. And you can now check. It is not that big deal. Now, let me conclude and give you my. So these are these states. When this transformation act on the first state, you get a next state. Fine? So in mathematical terms, x1 is equal to tx2, tx naught. Then x2 is tx1. I think computer science people will love this. Very simple iterative algorithms. What you are getting, you are in a state x0 at time 0. You apply the probability matrix, you apply the stochastic matrix, you go in the state x1. Then you apply at state x1, you go to the state x2. x2, you apply t, you get the state x3. In that way, you get a sequence. Fine? And you are interested, as you are very much interested in the steady state vector. What is a steady state vector? Steady state vector, as I mentioned,
that we want what percentage of time the rat spent in the compartment 1, 2, and 3. So the steady state vector is given by this definition, T of x equal to x. When you apply the transformation T and you get the same x, that vector x is called a steady state vector. And this steady state vector is called fixed point. In our context, this is named as a fixed point. Why? Because it keeps invariant a state of the system under this transformation T the same as x. So study of fixed point theory is basically the study of finding the steady state vectors in a certain dynamic system. This is a very discrete dynamic system. Fine. Look at this. This T is a transformation, is a mapping from R cube to R cube. Fine. It is a finite dimensional case. But how long? Please, if you, agar aap thodi der ke liye, aapka bahut shukriya. If T is a mapping from R cube to R cube, finite dimensional case. But you know, mathematicians love working in infinite dimensional spaces, not infinite dimensional spaces. जैसे डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि सितारों से आगे जहां और भी. So we don't talk about this earth, which is say R cube. We try to add one more coordinate, bringing in space-time, and then we try bringing in a infinite dimensional space because your particle is moving in a space, and then we try to specify the state with the help of some Lebesgue integrable function. So that is why we love working with infinite dimensional spaces. So once this game is over, we try to move to infinite dimensional cases, and my talk is about that. Please. अगर मेरे इस पे कंट्रोल ना हो तो वैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह. कोई मेरे पास अगर है लैपटॉप इधर ही लैपटॉप इधर पीछे बैक ठीक है. Please keep this problem in mind. We are interested in finding an
element in a set which remains invariant under the action of certain transformation. So please keep this sentence all the time in your mind. We are very much interested in finding some object in the domain. Whenever you apply the transformation on that object remains invariant. Very simple example at the undergrad level, you know identity operator. Identity operator is an operator which whenever apply at x give you x. If you take an operator, say t of x equal to say x squared, then you can find whenever t will be acting at 0, you will be getting 0. Whenever t will be acting at 1, you will be getting 1. But whenever you will be acting at 2, you will be getting 2. So 2 is not your fixed point. Your 1 is a fixed point. So this is what we have in your mind. So why this problem is important? Why this simple problem is important? One application is, look at this. Very simple ordinary differential equation, dy over dx is equal to f of xy, y of x dot is equal to x dot. One way or other, I will not take you into more technical details. Very simple, one way or other, you can convert this problem into form of an operator equation, fine, and then you find the fixed point of that operator. Once the fixed point of that operator is found, that fixed point is the solution of this differential equation. So that is the story. So you have a problem, it could be very complicated problem, fine. You try to convert it into an operator equation, you do it. Once that operator equation is ready, then you try to find a fixed point of that operator. Once that fixed point is found, that fixed point is indeed the solution of your actual problem. This is not case with this differential equation. Even when you talk about the optimization problem, everyone like optimization problem. You have a function, you have a cost function, you want to minimize it. You have a profit function, you want to maximize it. Very easy. This is very much which is always desirable, fine. You have an optimization problem, you have a cost function, you have a constraint set, you convert that optimization problem into some operator equation. We get some different operator, then you find a fixed point of that operator. Fixed point of that operator will become the solution of your optimization problem. So it is one case. Not only that differential equation, you have a system of non-linear equations. You have a system of linear equations. You know those who are working in optimization theorem, optimization theory, sometimes they convert the problem into the system of linear equations, sometimes the system of non-linear equations. Then if you have a system of non-linear equations, you convert that system into a single operator equations. You try to find the fixed point of that operator. That fixed point become the solution of that optimization problem. So this is the whole story. So this is a differential equation. Without bothering you much about the technicalities, look at this operator equation. T of G is equal to H. T is an operator, G is your some function, H is some another function. That function H is defined with the help of some integral equation. You try to find the fixed point of that operator equation. Once you find the fixed point of that operator equation, you get the solution of your ordinary differential equation. So this is the equation I have been talking about. Then T of x equal to y. This is not an equation. This is an inclusion problem. Inclusion problem means you have one input, you apply your operator on a single input, you get the whole set. Then
this is this y belonging to tx. This is an operator inclusion. And then an element x is the fixed point of operator if this is satisfied. And if x belongs to t of x, your input go into the set t of x. Fine. You apply t at x, and this x goes in t of x. This is called a fixed point of multi-valued operator. T of u is equal to 0 equation. You can call it a system of nonlinear equation. Then you convert it into a fixed point problem, u plus tu, and then you get the solution. Look at now this result. You have an operator. This was the man Banach, but look at this condition. Look at this. If your operator satisfies this condition, distance between t of x and ty is less than or equal to alpha times the distance between x and y. If you don't like this inequality, distance between tx, ty is less than or equal to alpha times distance between x and y, leave it. I explained you in a different way. In a domain, you have some closed ball. Fine. You have an operator. Whenever it acts on a closed ball, it takes to range, it takes to the target set, and the size of the closed ball get contracted. So if operator have this property, mean whenever it will be acting on a closed ball, it take to the target set and size of a ball is bit contracted. Such a mapping is said to be contraction mapping, and an operator T which satisfies this condition, and your matrix space is complete. Then this operator equation has a fixed point. So this is the first result in using the concept of a distance. Then look at the second result in this line. First result was dealing with an operator which take input, give you single output. These are the results which deal with you are applying your transformation on single input, but it is giving you a set as an output. So then this gentleman proved this result that if distance between two sets, now we are talking about we are not talking about the distance between two elements. Now we are talking about the distance between two sets. We are talking about the distance between this room and the office of Professor Dr. Muhammad Anwar Chowdhury. We are not talking about the distance between me and Professor Dr. Ghulam Mustafa. We are talking about the distance between rooms. We are talking about the distance between the universities. Now, it is really very important. It is not that simple when you say the distance between two universities. How to find the distance between two universities? Where to start, where to end? So this is really important. It is not that simple as we are thinking it is. So we have a notion of the distance between two sets. If this property is satisfied, then this multi-valued mapping T from X to CBX, when I say CBX, CBX being collection of all closed bounded subsets of X. Fine. Then your operator inclusion has a solution. Mean there exists some X which goes to T of X. One thing more I want to say at this point. You remember at the start of my talk, I said there is a very important problem of the uniqueness. In the previous theorem,
we have a uniqueness. If there exists a point x which remains invariant under the action of the transformation t, it is unique. But here, it is not unique. There could be many x for which you can say x belongs to t of x. One very simple example, if you can remember, is if you take t of x equal to one bounded set M, then always x will go to t of x. So this is a second result. Then look at, sometimes, now I come towards the title of my talk. Sometimes you are given some operator and you are unable to solve the problem with that particular operator. Then you try to modify. This is the basic idea. There is always a room for improvement. So this is a room for improvement. So instead of playing with the actual operator t, we take a convex combination of the input and the output. When I say the convex combination, it simply means that whenever you take two elements and you join them with the help of a line, the whole line remain in that set. Such a set is said to be a convex set. For instance, this surface, if I take 1 point over here, 1 point over here, I join them with the help of a straight line, the whole straight line is on this set. Fine? But if I take a set like this, then I take 1 point over here, 1 point over here, I join them with the help of a straight line. This whole straight line is not in this set, so this is not a convex. So I need this structure. We need a structure where whenever you join them with the help of a straight line, that straight line remains in a set. So we define an operator which is called averaged operator. Fine? Which has been defined with the help of input and output. And in a similar way, you can define with the help of a set-valued mapping. Interesting thing. Interesting is, you have modified your operator, but the output is same. Whatever the fixed point of t was, the fixed point of average operator is same. So the set of the fixed point of t and the set of the average operator of t is same. So we are lucky. Why? Because now you have a convexity structure. Instead of finding the fixed point of an operator t, we will find a fixed point of average operator. Okay? And sometimes you will see finding the fixed point of the average operator is simpler than finding the fixed point of the actual operator indeed. Then Browder and partition. I want to go to this. I don't think you will be very much interested in seeing these faces, but I'm going to share the idea. The idea is, they defined you have a matrix space and you construct a sequence of successive approximation. Please don't forget this example. This is a sequence of successive approximation. T acting at state x1, you get x2. T acting at state x2, you get, and that is, those who are working in probability theory, they know that we are talking about Markov chain. So this is the Markov chain, which is the collection of probability vectors and stochastic matrix. Anyhow, so this is a sequence of successive approximation. So this is a sequence of successive approximation. If this goes to 0, then your operator is said to be asymptotically regular. Fine? Then story starts. People thought that if your operator is continuous operator, defined from 0-1 close interval to 0-1 close interval, and sequence of successive approximation converges to 0, this way, your sequence is asymptotically regular, then such continuous map has a fixed point.
that was necessary and sufficient condition. Fine, on 0, 1 closed interval. But as I mentioned, we don't like 0, 1 closed interval. It is a finite dimensional sort of things. It has length equal to 1. Then people tried, how can we extend this result to the second dimensional spaces? I mean, if you take a closed ball and you define your transformation from one closed ball to another closed ball, then it was found that it is very hard to prove the same result which you can do on a 0, 1 closed interval, that your map was continuous. This asymptotic regularity condition was satisfied, but the sequence of successive approximation was not converging to the fixed point. There are examples that was proved over there. So the game stopped at that point. Then another question. If your sequence has this property, can every subsequence has the same property? The answer is no. Then there was another question that yes, if, and there is very trivial example which support this argument. So this is named as asymptotic regularity. And now let me look at this very simple example I have chosen for you, t of x equal to 1 minus x. This is not a kind of mapping. This is not a kind of mapping which satisfies this condition. Tx, ty is less than or equal to alpha d of xy. This does not satisfy this condition. But please try to construct a sequence of successive approximation. You can see it is not convergent. It is very, very bumpy path. You can see 1, 0, 1, 0. So you are generating a sequence, but there are many bumps. So this sequence is not convergent for this map. But the beauty is, you don't have asymptotic regularity for the given operator, but if you construct an average operator, you get 1 over 2. And then look at this sequence of successive approximation, you get 0. So it is converging to 0. So this means there was one property which was not satisfied by the actual operator, but you modified it, you enriched it, and the enrichment have given you that property. So this is the basic idea of my talk. Now I can stop my talk at any moment because nothing left. This is what my message was. Okay, let me share some. This average. Yes, sir. So how we can find lambda? Given t, Yes. we're using t lambda, how we can find lambda? As long as, sir, lambda is concerned, whenever we have an input, we have an output, we want to construct a line between x and t of x. So there are certain cases, I will share that. Yes, I have found this, yes, 1 by 2. This is 1 by 2. Is it 1 by 3 and 2 by 3 is okay? No. No. So this is what Because there was a condition that lambda lies between 0 and 1. 0 and 1. So but a proper physical lambda will be useful. Yes. How to find that? Yes. But the 1 by 3 and 2 by 3 is total is 1. Yes. Average is okay. Yes. That is weighted average. This is Weighted average. Is it not weighted average allowed? No. this is what I will be posing one problem, and I am discussing that problem as well. Thank you very much. So, in 1955, Krasnodębski used this fact to prove the fixed point results for non-expensive operator, which in general is not asymptotically regular. But an average operator of non-expensive operator is asymptotically regular for lambda equal to 1 over 2. Fine?
So what is the message? The message is average operator enriches the class of non-expansive mapping with respect to one property. So we have a certain property which was not satisfied by your actual operator. You have enriched your operator, and then that enriched operator has that particular property. Now, keeping in view this idea, one of my research collaborator, Professor Brinde, and they thought about this idea. So please give me a few more minutes and I'm going to conclude it. The idea was your actual operator satisfies this condition, distance between tx, ty, alpha distance between x, y. Keeping in view that your non-expansive operator is not asymptotically regular, but average operator is asymptotically regular, they thought, what about instead of taking these contraction conditions on actual operator, take the contraction conditions on the averaged operator. So distance between t lambda x, t lambda y is less than or equal to, say, some sort of alpha between distance between x and y. It is not go that straightforward, but the basic idea was this. So this is the condition. Look at. Whenever you take b in 0 infinity, you take theta in 0 to b plus 1, and if this condition is satisfied, you said your contraction is enriched contraction, and definitely if you take b is equal to 0, you go back to your actual contraction mapping. This is the motivation, and now I come towards my own result. This was the paper in 2021 where we proved common fixed point theorem for modified Canaan enriched contractions pair in Banach spaces with applications. This was our result, and then we have this another result I can share with the students whosoever like to find my paper. This work with Brinde, we proved that enriched multi-valued contraction mapping with applications, not doing with an operator getting single input, giving you the single output. We worked it with multi-valued enriched. These are some work you can find in the literature. I with Brinde, and then my PhD students Rizwan Anjum, Rekovich, and then my colleague Hira Iqbal, and here are some future directions as well. In a contraction condition, instead of taking b greater than or equal to 0, we thought, why can't you take b from minus infinity to infinity? These days we are working on that problem. And also the taking of the conditions that lambda is in 0, 1, instead of taking 0, 1, instead of taking the line segment, we are taking the extended line on the both sides and trying to find the results. Thank you very much.
You can find many proofs of the broader principal theorem, but one simple proof which I found is based on the Stokes theorem. And without using any other result. No. There are alternatives, many of them. Like complicated. Any other question? Many questions. Which is not. From student, any question? Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं. Business student. बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं. No question. Now it's time to welcome our respected guest, who has truly set a benchmark of multi-hyphenated achievements. He is assistant professor in Bahauddin Zakariya University, Multan. He has served for 23 years in Pakistan Air Force and Development Setup and retired as Wing Commander. He did his PhD in 2013 from Bahauddin Zakariya University, Multan. He have a number of publications, around 33. I am honored to invite on stage our respected guest, Dr. Karrehé. Sir, please come on stage and talk on this topic of explainable artificial intelligence based to main focus inside harvesting and model burning by fault diagnosis of steel plates. Sir. Assalamu alaikum ji. Am I permitted to speak in Urdu, sir? मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती भी नहीं है. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं अच्छी. वो कहते हैं मुझसे अच्छी रही किस्मत मेरे अफसानों की. मेरा तारुफ ज़्यादा करवा दिया कि बहरहाल जी मैं हम्बल स्टूडेंट हूँ मैथमेटिक्स का. सबसे पहली बात यह है कि ये महफिल बहुत अच्छी है. मुझे बड़ा अच्छा लगा ISP में आकर. नहीं सर मुझे वाइट बोर्ड नहीं चाहिए. आप लोगों को चाहिए? तो मैं शुक्रगुजार हूँ ISP का जी कि यहाँ पर बुलाया गया है. और बज़ाते खुद ये बड़ी खुशी की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग ज़्यादातर बिजनेसेस की तरफ जाते हैं. तो अगर हमारे बिज़नेस के लोग एजुकेशन सेक्टर की तरफ आएंगे तो ये सेक्टर और अच्छा होगा. मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि यहाँ के एनवायरनमेंट देखकर और यहाँ के लोगों का जिस तरह से आप लोगों को देखकर मैं यकीनन जहाँ भी जाऊँगा इस इदारे की तारीफ़ करूँगा कि ये एक अच्छा इदारा है. इसमें कोई शक नहीं. अच्छा जी मेरा जो काम है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा. स्टूडेंट्स का मुझे पता चला कि यहाँ पर ज़्यादातर अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं तो और MS हैं MS हैं. अच्छा जी ठीक है. तो मैं उसी लेवल से इसको सेट कर दूंगा. अच्छा 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 माशाअल्लाह. कसरत जलवा से चश्मे शौक किस मुश्किल में है. इतनी शम्में कब हैं जितनी रोशनी महफिल में है. मैं उन लोगों में से हूँ जो ये यकीन रखता हूँ कि मैथमेटिक्स को एक इंजॉयबल चीज़ होना चाहिए. मैथमेटिक्स इज़ एन इंटेलेक्चुअल डिलाइट मोर देन अ सब्जेक्ट. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल डिलाइट. सो देखिएगा जी चलें बात शुरू करते हैं. देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बिल्कुल हमारे सामने आ गई है चैट GPT वगैरह की वजह से. तो चैट GPT में या इस तरह के और आपके पास गूगल असिस्टेंट मौजूद है. आपको मैं एक तजर्बा में से गुजार सकता हूँ ख्याल में. फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक ड्राइवरलेस कार में
जो कि एज अ टैक्सी रिटर्न चल रही है, तो उसके अंदर आप बैठे हुए हैं एज अ पैसेंजर। अब ये जो हायर्ड टैक्सी है, ये किसी बंदे को जो फुटपाथ पे खड़ा हुआ था आपको लेके जाते हुए इसने अचानक उसको टक्कर मार दी है और उससे मार दी है। तो जब ये इस तरह से कोई वाकया हो जाएगा तो कुछ कानूनी और इखलाकी सवालात पैदा हो जाएंगे कि जो बंदा मर गया है उसको कंपनसेशन कौन पे करेगा, किसको सजा दी जाएगी, ड्राइवर तो है नहीं उसमें। एल्गोरिदम सबसे पहले तो जाहिर है कमजोर तरीन चीज तो इसमें रियाजीदान ही होगा, जो जिसने एल्गोरिदम डेवलप किया, उसकी गर्दन पकड़े, उस कंपनी को कहें जाकर जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर कार को बनाया है, किसको आपने जिम्मेदार ठहराना है। ये चीज, ये एक नया सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे मुआशरे में आ रही है, तो ये नए सवाल जो कि इखलाकी नौयत के हैं, कानूनी तौर नौयत के हैं, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। ये कब इनका हल कैसे निकाला जा सकता है? एक फैसला किया जाता है, मसलन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में लोन्स दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को नो कर दी जाती है। अब एक स्टूडेंट जो है वो शोर मचाएगा कि जी मुझे तो गलत दे, इन्होंने, मैं तो डिजर्विंग था, मुझे ज़रूरत है, तो मुझे उसने नो कर दिया है। तो मुझे इसकी वजाहत बता दें कि मुझे क्यों इनकार किया गया। जिम्मेदारी के तयन के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वजह बयान कर सकें। जैसे अदालतों में होता है कि जिम्मेदारी का तयन, सजा देने से पहले जिम्मेदारी का तयन होता है, और जिम्मेदारी का तयन तब होगा जब इरादों का पता लगेगा, वजाहत दी जाएगी। वो मुजरिम है तो भी वो वजाहत देने की कोशिश करेगा, मुल्जिम है, उसके बाद मुजरिम का तयन होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स हैं, अब नई कैफी सूरत हाल में, क्योंकि तहजीबी सतह पर ज़रूरत पैदा हो गई है कि टेक्नोलॉजी में, साइंस में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वो अपनी वजाहत पेश करे। हमेशा रियाजी जो है वो तहजीबी ज़रूरियात के जवाब में डेवलप होता है। तारीख में बड़ी लंबी मिसालें दी जा सकती हैं, वक्त की कमी के बायस मैं ज़रूरी चीज़ों को सामने रखूँगा। अब इस नई तहजीबी और तकनीकी ज़रूरत की वजह से ऐसा रियाजी, और फिर उसको अप्लाइड फॉर्म में हम लेकर आ रहे हैं, जिसको कहा जाता है एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, XAI। AI आपने बहुत सुना पहले भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब नाउ इट इज़ कॉल्ड XAI, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये ज़्यादा इन्वॉल्व किस्म की है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वो हैं। आप इसको मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आखिर में अपनी चंद मारूज़ात आपके सामने रख दूंगा, और वो स्टूडेंट्स जो इस एरिया में अगर काम करना चाहें तो उनको दावत दे दूंगा कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। मज़ीद कुछ चीज़ें जो हैं, आप मेरा इस पर यूट्यूब चैनल का एड्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, आप लोग उस पर जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसको, अच्छा ये जहाँ से या डिवाइस है, क्या है कि क्या नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट बताइए, ये नेक्स्ट है, ठीक, शुक्रिया। ओके जी, मेरा जो टॉपिक है जिसका ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है, आई होप उस साइड पे भी क्लियर है और उधर भी नजर आ रहा है, तो ठीक है। ये एरिया जो है इसको मैं सबसे पहले बयान करूंगा। ये एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर हुआ ये है कि स्टील प्लेट्स जनरेट हम कर रहे हैं, स्टील प्लेट्स बनती हैं, तो वो जो स्टील प्लेट्स हैं उनको बनाते हुए उनके अंदर फॉल्ट्स आते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्रियल जो फॉल्ट्स हैं ये 6-7 नौयत के हैं। अब हम डिटरमिन ये करना चाह रहे हैं कि एक तो वो हमें बताए कि इसके अंदर फॉल्ट्स कौन कौन से हैं, और दूसरा फिर वो उसकी वजाहत दे कि उसने वो जो फॉल्ट्स तयन किए हैं वो क्यों किए हैं। क्या उसके लिए जिम्मेदार जो फैक्ट्री का प्रोसेस है वो जिम्मेदार है, या मटेरियल जिम्मेदार है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जिम्मेदार है, किस लेवल पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको इसके अंदर सॉल्व किया गया है। मजमूई तौर पर ये प्रॉब्लम है। इसको मैं जल्दी से आपको करूंगा क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसको आप बतौर मिसाल देखिए। नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट मैंने नहीं कहना अभी, ओके ओके। ये बात वो है जो मैं आपको बता चुका हूँ। मजमूई तौर पर ये डेटा सेट जो है जिसमें 27 ऑब्जर्वेबल्स हैं और 7 बाइनरी कॉलम्स हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली 7 फॉल्ट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, इनमें से मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, बाज जो है वो कंटिन्यूस हैं और बाज जो है वो कैटेगोरिकल हैं। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम को ट्रेन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस डेटा है, इम्बैलेंस डेटा होने का नतीजा ये है
کہ اس کے اندر جو مختلف فالٹس ہیں ان کی جو پروپورشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, یا کہہ لیجیے بہت ان ایون ہے. مثلا ایک فالٹ ہے جو تقریباً 30% میں موجود ہے, جبکہ دوسرا ایک ایسا فالٹ بھی موجود ہے جو کہ آلموسٹ 1% میں موجود ہے. اب یہ ہائیلی امبیلنسڈ ہے. اب اگر ہم اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام کو اس پر ٹرین کریں گے تو کیا ہوگا, وہ اکثریت جو کلاس ہے اس کی طرف چلا جائے گا, اس کا رجحان بن جائے گا کہ وہ ہر چیز کو 30% والے کی طرف, کلاس کی طرف کرتا چلا جائے گا, اس کا رجحان اکثریت کی طرف, اس کا توجہ جو ہے نا, اس کو اٹینشن میکنزم کہا جاتا ہے, جو آج کل آپ لوگ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ کام آپ نے کیا ہے تو وہ ایک اٹینشن میکنزم ہے, اس کی توجہ جو ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے. اس توجہ کو واپس لانے کے لیے, برابر کرنے کے لیے ہم امبیلنس ڈیٹا کو بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس کی پہلی سٹیج ہے. یہ اب ہم نے یہ والا یلو ہے, یہ آپ کو بتاتا رہے گا باکس کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں امبیلنس ڈیٹا اوریجنل کو لیا گیا ہے, اس جگہ پر اب ہم اس کو انڈر سیمپل کر رہے ہیں, یعنی ساری چیز, سبھی جو کلاسز ہیں ان کو 1% پہ لے آئیں. جو کم سے کم کلاس پروپورشن ہے وہ 1% ہے, تو ساروں کو 1% کر دیں. نقصان اس کا یہ ہے کہ نمبر آف ڈیٹا پوائنٹس کم ہو جائیں گے, اور ٹریننگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی, جو لرننگ ہوگی وہ ان سین پرابلم کو سالو نہیں کر سکے گی. سو یہ اوور سیمپلنگ ہے, ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ ہے. اور ہمارا یہ کام جو ہے یہ بیسیکلی سموٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, سنتھیٹک مائنورٹی اوور کلاس ٹیکنیک اس کو کہا جاتا ہے سموٹ. سموٹ کے اندر سنتھیٹیکلی آرٹیفیشل ڈیٹا پوائنٹس جنریٹ کیے جاتے ہیں جو کہ ریئل ورلڈ ڈیٹا میں نہیں آ سکے, لیکن ہم ایک کائنڈ آف انٹرپولیشن آپ کہہ لیجیے یا ایکسٹراپولیشن کہہ لیجیے, وہ کی جاتی ہے ملٹی ڈائمینشنل اسپیس کے اندر. سو یہ سچویشن تھی جی ہماری, جس فالٹس جس کے اندر ہم نے کی, اور یہ فالٹس آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو. مثلا بمپس ہے, کیس اسکریچ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرٹینس جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس موجود ہے. سو یہ روز اور فیچرز ہیں یہ اس کا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس پرابلم کو 9 مختلف الگوریدمز کو دیا. 9 مختلف الگوریدمز جو ہیں ان کے اندر, کیونکہ غالباً ایم ایس کے لوگ یہاں ہیں زیادہ, اچھا ایم ایس کے جو لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ 9 مختلف قسم کے جو الگوریدمز ہیں, یہ وہ الگوریدمز ہیں جیسے سپورٹ ویکٹر مشین ہے, ملٹی ڈائمینشنل لینئر ریگریشن ہے, اسی طرح سے لینئر ڈسٹریبیوٹیڈ انالیسز ہے. ان کو استعمال کیا گیا 9 کے 9 کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ 9 الگوریدمز ہیں اور 4 ڈیٹا سیٹس ہیں. سیمپلنگ کی وجہ سے 4 ڈیٹا سیٹس جنریٹ ہوئے اور 9 جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے الگوریدمز آ گئے. تو اوور آل یہ جو کمپیوٹیشنل ایکسپیریمنٹ ہے کافی ایگزاسٹو ہو گیا, اس نے ہمیں کافی مشینز کے اوپر پرابلم دیا. 36 کو ہم نے سالو کرنا تھا. تو بہرحال ود دس اس کو ہم کر سکتے ہیں. اوور آل جب ان ساروں کو ہم نے بنا لیا, ٹرین کیا, ٹریننگ کے نتیجے میں یہ کنفیوژن میٹرکس ہمارے پاس جنریٹ ہوا ہے. جو لوگ ٹیکنیکلی جانتے ہیں کنفیوژن میٹرکس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو الگوریدمز ہیں وہ کتنا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, کتنے وہ کنفیوزڈ ہیں. دس از ٹیکنیکلی نون ایز کنفیوژن میٹرکس. تو اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں پر یہ ڈائگنل جو ہے یہ بیسیکلی اس اسپیس کا فکس پوائنٹ ہے. ویری انٹرسٹنگ فار مائی کولیگز ہیئر سر, یہ اس کا فکس پوائنٹ ہے جس اسپیس میں یہ کام ہو رہا ہے. جوں یہاں پر کنورجنس آئے گی بیسیکلی میرا جو پورا پروسیس ہے اس کے متعلق مجھے اطمینان ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اب ٹھیک لرننگ کر گیا. دس از اے ویری انٹرسٹنگ اپلیکیشن جو لوگ فکس پوائنٹس میں کام کر رہے ہیں. اچھا یہ ان کی ایررز ہیں, جو کچھ بھی ڈائگنول سے ہٹ کے ہو رہا ہے یہ اس کی ایررز ہیں. یہ دیکھیے اس جگہ پر کچھ ایررز کریٹ ہو رہی ہیں اور اس جگہ پر کریٹ ہو رہی ہیں. تو اس کو اب ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی. یہ اس کی اچھا اب جب ہم کام کرتے ہیں اس میں کیونکہ 27 مختلف ڈائمینشنز میں اس کی پراپرٹیز کو میئر کیا گیا ہے تو 27 کی 27 کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے. ایکسپلینیبلٹی کی ایک اہم خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سمرائزیشن ہو سکے. اگر جسے اردو میں یا پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ عدالت میں جا کے لمبی اور جھلی بات کریں گے تو وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتی. ایک ذہین پروگرام یا آدمی دونوں کی گفتگو مختصر ہوتی ہے, اس کی یہ خاصیت پائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل فزی میتھمیٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گیا, کیونکہ فزی سیٹس جو ہیں وہ ڈیٹا کو سمرائز کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اب ہم اس میں سے سمرائز کرنے کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان 27 میں سے مختلف جو فیچرز ہیں, ان کو کالمز کو یا فیچرز کہا جاتا ہے ویریبلز کو, کون سے کتنے امپورٹنٹ ہیں.
इसको फीचर इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम कहा जाता है। तो यहां पर ये मुख्तलिफ फीचर, ये हमने फीचर इंपॉर्टेंस ली है और ये सारे के सारे जो हैं ये इस ऑर्डर में आ गए हैं। इनकी जो तरतीब है वो लगा दी गई है कि सबसे अहम वाला जो हमारा वेरिएबल है वो ये वाला है, लेंथ ऑफ कंटूर्स, ये सबसे अहम वेरिएबल है और बतदरीज वेरिएबल्स जो है उनकी अहमियत कम होती चली जा रही है। अब एक अच्छे प्रोग्राम के लिए जरूरी ये है, यहां पर दो चीजें होंगी। देखिए, अगर हम इसकी सारी फीचर्स को ले लेते हैं तो ये हाइपर सेंसिटिव एल्गोरिदम डेवलप हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब थोड़ी देर पहले डॉक्टर मुजाहिद ने जिस तरह बड़ी खूबसूरती से इसको बयान किया कि अगर आप उसकी इनपुट में छोटी सी तब्दीली करेंगे तो उसकी आउटपुट में बहुत बड़ी अगर तब्दीली हो गई तो आप इसको कहते हैं जो हाइपर सेंसिटिव है। आपने देखा होगा लोगों में, इंसानों में, हम उस बंदे को मुस्तहकम कहते हैं जो बहुत बड़ी चीज भी हो जाए तो वो कंट्रोल्ड में रहता है। लेकिन अगर एक आदमी है, उसको जरा सी कोई चीज आपने जाके कही, जरा सी बात ही की तो वो आगे से छत को जाके लग गया, तो आप जनरली मतलब हम जानते हैं कि जी नहीं, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, उधर बात नहीं करनी। वो हाइपर सेंसिटिविटी, अ लिटिल इनपुट, लिटिल चेंज इन द इनपुट क्रिएट्स एन अनरीजनेबली हाई चेंज इन द आउटपुट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनों में भी ऐसी इक्वेशनें हैं, लॉरेंस इक्वेशंस मसलन देखिए, मैं आज सुबह बल्कि आपके जहां आने से पहले पढ़ रहा था बर्जर इक्वेशन को। बर्जर इक्वेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। लिहाजा ये जरूरी है किसी एल्गोरिदम के लिए कि आप उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसके जरूरत की फीचर्स जो है ना वो उठाएं। ये प्रॉब्लम, इसको ये सब प्रॉब्लम है इस एरिया के अंदर। जब हमने इसकी फीचर डिटरमिन कर ली तो अब हम इस एरिया में आ गए जहां पर डेटा को स्मोट किया गया, सिंथेटिकली जनरेट किया गया, और ये चीज एक नई है, मिडॉइड। ये कॉन्सेप्ट मेरा ही दिया हुआ है। मिडॉइड्स बेसिकली, अब ये जो हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अंदर ये एक आइडियलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं। किया ये क्या है कि जो चीज हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम है हमारा, उनकी जो किस्में हैं, टिपिकल आप कह लीजिए आर्किटाइपल और टिपिकल प्रॉब्लम सिनारियोज जो हैं उनको अलग निकाल लिया गया। इसका मतलब ये है कि ये टिपिकल कोई हमारे पास अगर 7 कैटेगरीज हैं तो 7 वेक्टर्स हैं, 7 फीचर वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि टिपिकल हैं रोज में। उनको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये मिडॉइड्स, इनको हम मिडॉइड्स कहेंगे। ये लफ्ज मैंने लिया है, मीडियंस और मीन्स को अगर आप इकट्ठा कर देते हैं एक ही वेक्टर के अंदर तो ये मिडॉइड्स, ये लफ्ज पहले से मौजूद है, जिस मानी में मैंने इस्तेमाल किया है ये इस्तेमाल नया है। लफ्ज ये लिटरेचर में अच्छी तरह से पहले से मौजूद है। तो ये मिडॉइड्स यहाँ पर मसलन ये एक मिडॉइड है और ये मुख्तलिफ आपको 7 जो हमारी हैं क्लासेस, उनके ये मिडॉइड्स आपको नजर आ रहे हैं। सो रडार प्लॉट्स एक नई डेवलपमेंट है, डेटा साइंस में अभी हुई है और आजकल ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसकी जो विजुअलाइजेशन की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये 7 मिडॉइड्स हैं जो कि इस वक्त रडार्स की शक्ल में हमारे सामने हैं। सो ये एक टिपिकल स्टील प्रॉब्लम है। मैं ज़रा तेज़ी से चलूँगा। एग्नोस्टिक्स है, हाँ जी। यहाँ से ये जो पोर्शन है कि ये जो पोर्शन है यहां पर देखिए, इसमें मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके 4 जो तरीक़ेकार हैं वो इस्तेमाल यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें सिटेरिस पेरिबस है, पार्शियल डिपेंडेंस है, एट्रीब्यूशंस हैं और ब्रेक डाउन है। मॉडल एग्नोस्टिक होने का मतलब ये है कि ये वाले जो ओरिजिनल यानी जो एल्गोरिदम्स हैं उनका मैथमेटिक्स ऐसा है कि वो किसी स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम पे डिपेंड नहीं करता, वो जनरलाइज फॉर्म में बने हुए हैं। और जो लोग हमारे यहाँ प्योर में काम करते हैं उनके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा। ये बेसिकली जब मॉडल एग्नोस्टिक आप चीज़ बनाना चाहते हैं यानी जनरलाइज्ड बनाना चाहते हैं तो आपको टोपोलॉजिकल मेथड्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जिनमें से एक अहम डेवलपमेंट जो इस वक्त दुनिया में हो रही है उसका नाम है टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे TDA तो आपको काफ़ी कुछ इसके ऊपर मिलेगा। एरिया है, अच्छा एरिया है। हमारे यहाँ प्योर के लोग काफी सारे होते हैं, आप लोगों को इसमें काम करना चाहिए। सो सिटेरिस पेरिबस, पार्शियल डिपेंडेंस, इनको हमने इस्तेमाल किया जी। इसके बाद ये इनकी एक्सप्लेनेबिलिटीज हैं सिटेरिस पेरिबस की, और हमें जो इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है कि ये सारे के सारे तकरीबन इस एरिया में अगर आप देखें
तो ये एक अपने आप को ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर बम्प्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारा मैथमेटिक्स था या जो नॉर्मल इस एरिया की इंजीनियरिंग है वो ये डिटरमिन नहीं कर रही थी। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम दिस पेपर। बाकियों को हम किसी और उसमें देख लेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये जो है ये किया गया है कि जो मैथमेटिक्स के जरिए हम काम कर रहे थे उसको ऑर्डिनरी टेक्स्ट में, ह्यूमन लैंग्वेज में तब्दील किया गया है, क्योंकि एक्सप्लेनेबिलिटी के लिए ये भी जरूरी है कि आप अगर नई दुनिया में जा रहे हैं तो हर बंदा मैथमेटिशियन नहीं होगा। आपने अपने काम को इतना सहल और आम फहम अंदाज में प्रेजेंट करना है कि लोग उसमें खुद से दिलचस्पी लें और उनको समझ आए। ये भी एक टेक्निकल बंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपने सब्जेक्ट को लोगों में पॉपुलराइज करे। लिहाजा उसी के पेश नजर मैंने, अगरचे जब ये लिखा था उस वक्त ये बात मेरे ज़हन में नहीं थी। प्लीज योर क्वेश्चन है। ओके। For thinner plates with thickness less than thin, maximum probability is for bumps, which is understandable. इसी तरह से आप ये मसलन एक हमने रूल फाइंड आउट किया है। ऐसे ह्यूमन कंज्यूमेबल रूल्स जो हैं वो बेसिकली बड़े कीमती हैं। इनको कहा जाता है इनसाइट्स। ये मैथमेटिकल यानी वर्ल्ड से निकलकर इंजीनियरिंग वर्ल्ड में जब आप जाते हैं तो आप उनको फार्मूले नहीं देते, आप उनको इनसाइट्स फराहम करते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर मैथमेटिशियन को एज हासिल होता है और इंजीनियर उससे पीछे रह जाता है। आप जो कुछ देख सकते हैं रियाजी की इक्वेशनों से, वो एक इंजीनियर या एक टेक्निकल या एक जो बंदा बायो प्रैक्टिकल उससे प्लांट पे खड़ा हुआ है वो शायद नहीं देख सकता। बट आपके ऊपर लाजिम है कि आप अपने काम को आम फहम अंदाज में ट्रांसलेट जरूर करें। सो अगेन दीज आर पार्शियल डिपेंडेंस प्रोफाइल्स। ये एक अच्छी मसलन, ये एक सिंगल जो प्रेडिक्शन हमने की है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। गालिबन सबसे आसानी से जिसको समझा जा सकता है वो ये वाली है। इसको कहा जाता है ब्रेक डाउन प्रोफाइल। इसमें आप ये देखिए कि ये इसका इंटरसेप्ट है। ये आपको मालूम है इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? आप लोगों ने जो अंडर ग्रेड पे मैं उनसे पूछ रहा हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी इंटरसेप्ट है। y इक्वल्स mx प्लस सी, ठीक है। c क्या चीज है? आता है मुझे, आम फहम जुबान में मुझे बताइए। अभी भी ठीक है, आपने सही जवाब सही है आपका। जो मैं जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूं, किसी भी प्रोसेस में कुछ बुनियादी लाजमन अमाउंट होगी तो वो प्रोसेस चलेगा। उसके बगैर, मसलन ये हमारा ब्रेन 5 वोल्ट पे चल रहा है, इसी से दिल धड़क रहा है, इसी से ये लाजिम है, ये सी है। एक अंडा खा लेंगे एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एम जो है ना वो बड़ा है। एक्स एक अंडा है, जितने एक्स खाते जाएंगे ना आप वो बढ़ता जाएगा। लेकिन बेसिक सी आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी भी प्रोसेस के अंदर एक उसकी नेसेसरी, जिसे कहा जाता है क्रिटिकल मास होती है, जिसके बगैर वो इनिशिएट ही नहीं हो सकता, उसको कहा जाता है इंटरसेप्ट। बहरहाल इस पर फिर किसी वक्त हम बात करेंगे अगर मौका मिला तो। इस वक्त इस प्रॉब्लम के अंदर हमारी इस जो प्रेडिक्शन है इसका इंटरसेप्ट ये है 0.141, ये इसका इंटरसेप्ट है। ग्रीन कलर में वो वेरिएबल्स हैं जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया इस प्रेडिक्शन में। इसने प्रेडिक्शन को यहां पर ले गया, ये यहां पर ले गया, आगे बढ़ता गया। ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इन्होंने प्रोबेबिलिटी को कम किया है। रेड कलर का मतलब है प्रोबेबिलिटी पीछे आती चली गई, ये ग्रीन में है तो फिर पॉजिटिव हो गई। उसका नतीजा ये हुआ, ये सारी चीजों को जमा नफी करने के बाद हमारे पास तकरीबन 25% प्रोबेबिलिटी निकली है इस प्रेडिक्शन की, 0.25। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं हम इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेबिलिटी हमारे लिए कितना कुछ और कर सकती है। जब हमने ये काम कर लिया तो रैंडम फॉरेस्ट एक तरीकाकार है डिसीजन ट्रीज का, उसको इस पर अप्लाई किया गया है ताकि इनसाइट्स को फर्दर बेहतर बनाया जाए। सो दीज आर द इनसाइट्स। मैं इसकी टेक्निकलिटीज में अभी नहीं जाऊंगा। और हमने ये 3 कंट्रीब्यूशंस की हैं इस काम में। हमने इसमें एक हाई प्रेसिजन का जो है क्लासीफायर वो डेवलप किया है, इनसाइट्स हासिल की हैं और डोमेन स्पेसिफिक इनसाइट्स हमने हासिल की हैं।
اس کے ساتھ یہ میری ایگزامپل جو ہے، میں اس کو ایگزامپل سے زیادہ نہیں کہنا چاہوں گا، وہ ختم ہو جائے گی. آخر میں یہ چیزیں جو اس کی کنٹریبیوشن ہے، ریوزٹ ہے اور یہ تھینکس ہیں، میں صرف آپ کی توجہ یہ دلوانا چاہتا ہوں اس مثال سے. اس کو میں آپ کے لیے صرف مثال، اس کو بہت باریکی میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی ضروری ہے. ایک تو ہمارے ہاں بڑی کنفیوژن ہے، یہ میرا ذاتی آئیڈیا ہے، لہٰذا اگر کیونکہ میرے بڑے محترم اساتذہ یہاں موجود ہیں جن کے قدموں کے صدقے میں نے پڑھا ہے، وہ اختلاف یقیناً کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں میتھمیٹکس، ہر جو میتھ کی ڈگری لیتا ہے اسے میتھمیٹیشین کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. ہم 99% میتھ گریجویٹس پیدا کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک میتھمیٹیشین فردر بنتے ہیں. میتھ گریجویٹس کی بنیادی کام اور ذمہ داری معاشرے میں جانے سے پہلے یہ ہے، قبل اس کے کہ آپ جاب مارکیٹ میں داخل ہوں، آپ اپنے علم کو ہنر میں تبدیل کریں. اگر آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر اس 1200 گرام میں بہت سارا علم اکٹھا کر رکھا ہے تو وہ وزن ہے. جب تک یہ یہاں سے اتر کر آپ کے ہاتھ میں نہ آیا، علم ادھر ہوتا ہے، ہنر ہاتھ میں ہوتا ہے. ریاضی دان کا ہنر جو ہے وہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں ہے. وہ ریئل ورلڈ کا پرابلم سالو کر کے ایک بزنس مین کے سامنے، ایک انجینئر کے سامنے، یا کسی اور وینچر جو بھی کوئی کر رہا ہے، انٹرپرینور ہے، اس کے سامنے رکھے. بنیادی مسئلہ پاکستانی جو میتھمیٹکس کمیونٹی ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں، میتھمیٹیشینس کی میں بات نہیں کر رہا، نہ میرا مقام ہے کہ میں میتھمیٹیشینس پہ بات کروں. میتھ گریجویٹس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جس کاغذ پہ تو لکھ رکھا ہے کہ جی انہوں نے فلاں ڈگری لی ہے، لیکن جب آپ کو پرابلم دیا جاتا ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر کہ جی یہ پرابلم حل کر دیجئے، تو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی ادارے میں گئے، ٹھیک ہے، بہت اس وقت پاکستانی صنعت اور معیشت جو ہے متحرک نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 99% ہی جو یہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں وہ آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود جو لوگ جاتے ہیں میتھمیٹیشین ہونے کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے جی یہ ہمارا ڈیٹا ہے، ذرا اس کو تو ٹھیک کر دیجئے. دے ڈونٹ ڈو اٹ، دے کانٹ ڈو اٹ. سملرلی انہیں کہا جاتا ہے جی یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس کو ذرا آپٹیمائز کر دیجئے. حالانکہ یہ ڈسکریٹ آپٹیمائزیشن کا پرابلم ہے، نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے واحد وجہ کیا ہے؟ آپ لیپ ٹاپ سے دور ہیں. کبھی اور وقت ملا اگر سر آپ اگر وہ کر رہے ہیں کسی سٹیج پر ہمیں اس بات پر الگ سے بات کرنی چاہیے. امپلائبلٹی آف میتھ گریجویٹس کم سروس. میں نے کہا نا مجھ سے اچھی رہی قسمت میرے افسانہ. سر جب آپ BU میں اپلائی کر رہے تھے سر تو مجھے پتا لگا کہ آپ کا انٹرویو ہے سر تو میں نے کسی سے کہا کہ اگر گھر میں سلیکٹ ہو جانا سر سے پوچھ لینا، آسمان بیٹھا ہوا ہے. جی سر مجھے معلوم ہے لیکن میں نے صرف یہ بھی کہا کہ یار اگر وہ وہاں نہ ہو سر. تو اسے کہنا ہمارے پاس آ گیا. سر آپ کی نوازش ہے، آپ کی ذرہ نوازی ہے. بہرحال جی میں اس قابل نہیں ہوں سر. سر آپ کے پڑھائے ہوئے ہیں سر. سر ہے سر 5 منٹ اور ہیں، میں بات کر لوں. ڈیفینیٹلی میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب سے براہ راست پڑھا ہوا بھی ہوں اور سر کا متاثرہ بھی ہوں. میری ذہنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں سر کا بہت بڑا کردار ہے. انہی کی باتوں کا جھلک میرے اندر بھی نظر آئے گی، آپ کو یقیناً محسوس ہوگا. بہرحال میں واپس نقطے پر آنا چاہتا ہوں. میتھ گریجویٹس، اس بات پر آپ توجہ دیجئے پلیز. اگرچہ ایسے کرنا نہیں چاہیے کہ میں ریسرچ پریزنٹ کرنے آیا ہوں اور میں آپ سے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں موقع گریب کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وقت آپ کو اس ادارے میں ملا ہے، یہ ادارے اس وقت کی آپ قدر کیجئے. وجہ ہے دو. ایک، آپ کے گھر والے آپ کو آزاد کر کے گھر کے سارے کاموں سے سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، وقت بھی دیا ہوا ہے. ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ خود اپنے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں، جاب سے آ رہے ہوں، نو پرابلم. ایون دین آپ خوش قسمت ہیں. پھر آپ کے سامنے ایک بڑی پڑھی لکھی لاٹ موجود ہے آپ کی رہنمائی کے لیے. کچھ تو اول تو انہیں خود بہت کچھ معلوم ہے، وہ خود پہاڑ جتنا علم رکھتے ہیں. نہیں ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ فلاں جگہ پر فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات کر لیں. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ ادارے نے کروا کے بھیجنا ہے.
मेरा आपसे सवाल ये है, आपने अपनी शख्सियत पर कितनी सरमायाकारी की है? आपने खुद अपने ऊपर कितनी मेहनत की है कि मैं पसंदीदा और समझदार शख्सियत बन जाऊं, लाइकेबल एंड प्रोडक्टिव पर्सनैलिटी बन जाऊं? आप अगर मैथमेटिक्स जैसा इल्म जानते हैं, और स्टैटिस्टिक्स भी, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। दुनिया इस वक्त स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा रही है, स्टैट्स को अप्लाई करके ही तो डेटा साइंस डेवलप होगी। आपके लिए लाजिम है प्लीज़ कि इदारे के ऊपर, इदारों में जाहिर है वक्त लगता है, टाइम लगता है, आप बतौर इंडिविजुअल अपने ऊपर मेहनत शुरू कर दीजिए। और उसमें से बुनियादी चीज़ ये है कि इल्म आपको हासिल हो रहा है, मुख्तलिफ हुनर जो हैं उनसे अपनी शख्सियत को सजाएं। हम घरों से बाहर जाते हैं बाज़ार में, तो एक ही दिन में तो सारे घर की सजावट नहीं ले आते। जाते हैं, एक चीज़ अच्छी लगी, हाँ जी वहाँ अच्छी लगेगी, आप वहाँ से ख़रीद लेते हैं, कुछ जेब भी इजाज़त देती है तो एक चीज़ छोड़ दी, एक ले ली, आकर आप उसको लगा देते हैं। कुछ अरसे बाद वो घर सज जाता है। आपकी शख्सियत आपका घर है और हुनर इसकी सजावट है, हुनर जो कि इल्म पर मबनी हो। अब जो रियाजी आप जानते हैं जी, कोई आम शख्स नहीं जान सकता। 16-17 साल 21 साल आपने पढ़ा हुआ होता है। ये जो हुनर है हर बंदा नहीं कर सकता। लिहाजा मैं इसके साथ अपने मैसेज को यही ख़त्म करता हूँ, मैं बाकियों का वक्त ना ले लूँ। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। है, आइए जी बताइए। यूनिक माइक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग? फ़र्क पूछ रहे हैं आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का। अच्छा, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, पहले ऐसे कर लेते हैं, मशीन लर्निंग को पहले कर लेते हैं। एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, बैठ जाइए प्लीज आराम से। अगर आप तारीख में देखें तो इस पिछली सदी के शुरू में 1930 के इर्द गिर्द जो रिसर्च वर्क किया गया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से, वहाँ पर कुछ ऐसे पेपर्स लिखे गए जो कि रिकर्सिव फंक्शंस के ऊपर काम कर रहे थे। ये दरअसल कंटिन्यूएशन थी जो बूले ने 1859 में काम किया अलजबरा के ऊपर, ये उसकी कंटिन्यूएशन थी। वहाँ ये साबित हुआ कि हर वो चीज़ मशीन कर सकती है जो एज अ सीक्वेंस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस लिखी जा सके, या इसको यूं कर लीजिए, हर वो प्रॉब्लम जो एज अ सीक्वेंस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस लिखा जा सकता है उसे कोई भी फाइनाइट स्टेट मशीन सॉल्व कर सकती है। डॉक्टर साहब, सर अनुचोय साहब ज़्यादा तनकीदी नज़र देख रहे हैं, उनका फील्ड है ये, ओरिजिनल सर का काम ये है। हर वो चीज़ इसको कहा जाता है कंप्यूटेबिलिटी प्रॉब्लम। हर वो चीज़ जो एज अ रिकर्सिव फंक्शन लिखी जा सकती है, इसका मतलब है वो फाइनाइट स्टेट मशीन पे हल हो सकती है। इसका मतलब ये है उसका एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है। जब किसी चीज़ का एल्गोरिदम एग्जिस्ट करे तो वो मशीन लर्निंग होती है। ये भी याद रखिए सर, आ गया नहीं एग्जैक्टली वही रिकर्शन। जी सर, उस वक्त रिकर्शन कहते थे, था ये आइटरेटिव ही। अच्छा, जब रिकर्सिव फंक्शंस के अलावा आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसका एल्गोरिदम एग्जिस्ट ना करे, सरे राह मैं आपको बता दूं एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम्स आर थ्योरम्स इन एक्शन। जब एल्गोरिदम एग्जिस्ट ना करे किसी प्रॉब्लम का, अपनी पेचीदगी की वजह से या कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन, नंबर ऑफ ऑप्शंस इतनी ज्यादा हो जाए कि उसका एल्गोरिदम जो है वो, मसलन शतरंज का एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है लेकिन वो इतना बड़ा है कि कोई भी मशीन उसकी अगली चाल चलने के लिए कई 100 साल लेगी। जब प्रॉब्लम ऐसे आ जाए कि उसका एल्गोरिदम एग्जिस्ट ना करे तो वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है। अच्छा, दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर परसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। मसलन दुनिया में कोई एल्गोरिदम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिससे आम इंसानी जुबान को बयान किया जा सके। ये वजह है कि चैट जीपीटी के पीछे अटेंशन मैकेनिज्म बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स लगे हुए हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि जिस चीज़ में इदराक का मसला आएगा, परसेप्शन का मसला आएगा, मसलन विजन, साउंड, लैंग्वेज जनरेशन, स्टोरी राइटिंग, पोइट्री, इन चीज़ों के अंदर आप एल्गोरिदम नहीं डेवलप कर सकते। हाँ,
ایک دوسری بات بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اے آئی بہتر ہے اور مشین لرننگ کم ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے. چیٹ جی پی ٹی کو آپ 5+6 دیں تو وہ غلط جواب نکالتا ہے, وہ 12 کہتا ہے, 11 نہیں کہتا. یہ دوسری بات بھی سمجھیے, جب کسی چیز کا الگوریدم ایگزسٹ کرتا ہو تو اس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بری طرح فیل ہوتی ہے. الگوریدم اگر وہ ریکرسو فنکشنز میں ایکسپلینیبل ہے صرف اسی صورت میں وہ مشین لرننگ ہے, ادروائز اٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس. از اٹ کلیئر؟ تھینک یو سر. ریکرسو فنکشنز اتنی پیچیدہ تھیوری ہے کہ میری تو پر جلتے ہیں اور اتنی خوبصورت ہے, اس کے اندر یہ چیزیں کی گئیں. ایون آپ دیکھیے سر, یہ جو براور ہے یہ ٹیورنگ کا استاد ہے, جس نے یہ فکس پوائنٹ میں کام کیا ہوا ہے, یہ ٹیورنگ کا استاد ہے. ٹیورنگ کی ڈیتھ جلدی ہوگی. ٹیورنگ وہ آدمی ہے جس نے پہلا پیپر لکھا تھا کین مشینز تھنک. یہ وہ آدمی ہے جس کے اس پیپر کے اوپر 1942 میں پہلا کمپیوٹر بنا ہے. ٹیورنگ مشین سر, میں ٹیورنگ مشین آپ سر, میں ایک اور توجہ بھی دلوانا چاہتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹیچرز ہوں گے, پلیز آپ سب مجھ سے بڑے بہتر ٹیچرز ہیں. میں تو ایک ایسے جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پڑھائی نہیں تھی, کچھ اور تھا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود تاریخ کو پڑھ کر اور عام لوگوں کے سامنے اپنے سبجیکٹ کو عام زبان میں بیان کیجیے. ریاضی خاکم بدہان قریب المرگ ہے اس معاشرے میں, اور اگر یہ ریاضی نہ رہا, اناتول فرانسس نے کہا تھا پیپل ہو ڈونٹ کاؤنٹ دے وونٹ کاؤنٹ. جو گنتے نہیں وہ گنے بھی نہیں جاتے. لہٰذا ہمارے معاشرے پر لازم ہے کہ ہم اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہتری چاہتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی روح رواں ریاضی کا شوق اور ولولہ اس قوم میں ایک نئے سرے سے پیدا کریں. میں اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں, وقت زیادہ ہو چکا. بہت شکریہ جی. Thank you so much, sir. I am extremely delighted to call a person who is the professor in Abdul Salam School of Mathematics and Computing Science, Abdul Salam School of Mathematics, Mathematical Sciences, GCU Lahore. He did his PhD in Mathematical and Computing Sciences from Tokyo Institute of Technology, Japan. He served in Qatar University for 14 years. His publications are 129. We are all blessed with his presence in ISP. I would like to call Professor Dr. Safir Hussain Khan to talk about common attractive points and further generalize hybrid mapping. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ladies and gentlemen, my dear professors, Dr. محمد انور چوہدری, Dr. Abdurrahim Khan, and all my colleagues and my friend Professor Mujahid Abbas, I am really thankful to the organizers and my professors who gave me this chance to present before you learned people. And you know, it's always difficult to present before a person who has been teaching you. And now it becomes like a test. It becomes like a test. However, sorry sir? But the next point, I'm coming to that point, sir. The next point is that why I'm here or why one student should be here. And this is the teacher who gives you the confidence to talk before him. So that's why I'm here, sir. So you don't need to go. That's why I'm here. So let me repeat my lessons which I have learned from them. So our
The topic of the symposium involves fixed point theory and artificial intelligence. My predecessors have really built a very good building for me, so the things have become simpler for me to talk. Like the applications of fixed point theory are now, let me tell you that applications are of two types, in my opinion. You may differ. A hardcore application and a softcore application. Hardcore applications are like you apply them to build a model, to build something physical. But the softcore applications are the applications which are working in the background. So fixed point theory has so many applications which usually work in the background. We are not on the foreground like an engineer, right? So, like for example, I'm not sure that Newton knew when he saw the apple falling that this will be something so huge theory. He didn't know the applications. So the applications come with time. They are important. They are really important. But the point is, you need to be patient to get them and keep on working. You need to be consistent to get the applications, if at all possible. Now, coming to the point, fixed point theory, my colleague and friend, Dr. Professor Mujahid Abbas, has done a beautiful story here. Now, basically, what is a fixed point? Once again, you know, when you invest something, you naturally, the first thing is, the first thought ever that comes to your mind is that I should get back at least what I have invested. And that in economics is a break even, right? And that is the fixed point. So when the input becomes equal to the output, that is the fixed point, right? So, of course, you want to go beyond that. That's natural. So fixed point is not coming from the heavens. This is just around you. Like, for example, if you stir a cup of coffee, there is definitely one point which doesn't change its place. So that is a fixed point. And there are so many applications, as my friend Dr. Karel told, that in, artificial intelligence or the machine learning. He told us that the process, the algorithm, that is successive algorithm, what you call it, that if that converges to, that should be a fixed point under certain conditions. So that gives you the solution, right? So, ये नहीं है यार, वो कहाँ है दूसरी? क्या? ये किसने चेंज की है? नहीं सर, मैंने अभी दी है इनको. I don't know what happened to that. This is there, right? जापान से की है मैंने, but not like that. Some Japanese could be there. Could be. Anyways, okay. So what we are going to discuss today in a very brief way, I would not be a hurdle between you and lunch for a long time. Sorry, जी DSC है सर मेरी. DSC ठीक है. इसकी वजह वो वहाँ का सिस्टम है जापान का, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, आप मेरे उस्ताद हैं. So डॉक्टर ऑफ साइंस यानी वो मास्टर डॉक्टर इस तरह करते हैं ना. वही मैंने कहा जी, मैं तो आपका शागिर्द हूँ. Doctor of Science is same in Pakistan as PhD, but in England maybe it's a little bit more. Yeah, right? So Pakistan में सर मैंने equivalency ले ली है HEC से. यहाँ ऊपर नहीं है, हम बराबर हैं यहाँ. So what we are going to talk about is the common attractive points, further generalized hybrid mappings, and a new iterative process. Again, let me tell you that fixed point theory
in my view, has 3 pillars. So there are 3 pillars in fixed point theory, in my point of view. They are the ambient space in which you are working, the iterative process through which you will approximate the solution, and the transformations are the mappings. These are the 3 things on which fixed point theory is based. Now you know it's quite well known, when the space changes, you know, the rules change. For example, if you are here, you will be on the left side of the road. But when you go to, for example, United States, you will be on the right side of the road. So the rule changed. So as soon as the ambient space changes, the rules change. So the things become different. So you have to think again. So you have to be compatible with them now. Right? And that's why you have to build new tools to make yourself compatible with them. Right? Number 2 is the iterative process. Now you know, not every time we can find an exact solution. And many of you know this is quite normal in, ordinary differential equations and everywhere, in numerical analysis particularly. Right? So we try to find a solution which is close enough to the original solution. And that is the approximate solution. And that can be done through iterative processes. How good is that? That depends upon you and the tolerance you build. Right? So this is approximation of iterative process. The third thing is the transformation. Now, the transformation, you know, this is also something beautiful. It can give you different results. For example, if, the sugar cane, you put it in a machine, so you get 2 outputs. This transformation is giving you 2 outputs, a juice and the leftover material. So this is the transformation which gives you 2 outputs. It can give you several outputs, and this can give you a unique output also. Right? Okay, so these are the 3 things which generally build the fixed point theory. Even in these things, there are some special things, like I think I should talk about it later on. Okay, let's go. ये क्या है भाई? बस पीछे ठीक है, no worries, छोड़ दें. So quickly, we will discuss common attractive points, further generalized hybrid mappings, and iterative approximation of cap. Question then discussion. Go ahead. Anyway, now fixed point theory has been studied for the last many decades. Here is something a little different, which we call as attractive point. Anyways, I think there is some problem with this, but you know, fixed point is the point where input is same as output. And a sequence, if I talk in technical terms, a sequence converges to that point, for example. But when it remains closer to that point, that will not be fixed. But it's so close, then we may call it an attractive point. Right? So in dynamical systems, you know, there are attractive points and repulsive points and all the things like this. What was the need of, let us define attractive point like this. Like this.
So you can see that neither this definition gives you a fixed point, nor a fixed point gives you this definition. So they are independent. However, there is a relation between them, which we will discuss a bit later. G, C is subset of H. आगे चले. Just a moment, please. So why do we need to have fixed attractive points? See? This is the first nonlinear ergodic theorem. Here. You see, this is dealing with the means. It's dealing with the means, right? So through this iterative process, if this Bn converges to a fixed point under these conditions. This was given by Ballon, right? And you see, obviously this point deals with these fixed points, right? Under the hypothesis of closeness and convexity. You see, closeness and convexity. Convexity is also important, as my friend told you. A very simple and an interesting example is that crescent, the moon of the first night, is not convex, whereas the full moon is convex. This is a convex set. So closeness, this deals with the, what do you call it? Fixed points through closeness and convexity. However, these two conditions may be removed if instead of fixed points we consider attractive points. So we can get rid of these two conditions, right? And this is what they did. Like this. AT is a set of attractive points, is non-empty, closed and convex. Bn converges with the same, right? Where U0 is this and the metric spread. So under very natural conditions, this was, I think, Takahashi and Takeuchi, if I go back. Anyways, go ahead, please. Go ahead. So this is, the last theorem tells us what is the need of attractive points, because it is used in the ergodic theory. You know, ergodic theory is the theory which deals with the dynamical systems, right? Deterministic dynamical systems. A very interesting example is well-known Lorentz equations. The Lorentz equations, they cannot be solved, or they are not well behaved analytically or numerically or even topologically. So, but they are very well behaved from a probabilistic point of view. So that's why ergodic theory is important. And this theorem, attractive points, they form the base of, they were attractive, they were extracted. The idea was taken from the ergodic theory, right? Now, G Hilbert space. Wait, please, wait. Stay here, please. Now, there are so many mappings, as I told you. The second thing, we are taking Hilbert space as our ambient space, so we won't be we won't be changing it. But we can change in this talk, we change the mappings or the algorithm, or the algorithms are what you call as iterative processes. There are so many mappings or transformations. So I have a list of them. I will go very quickly through them. आप चलते जाएं, ऊपर चलते जाएं, चल जाएं और ऊपर जाएं, क्योंकि इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाए. और जाएं ऊपर जी, एक दफा और जाएं ऊपर, बस. So here is the contraction. I will go through very quickly. And if this alpha is 1, this becomes non-expansive. And you have a fixed point, then this is called quasi non-expansive.
these mappings play an important role in relating attractive points with fixed points. So by definition, they were different. However, for a certain class of mappings, they have a relationship between them, right? Quasi-contractives, if this condition is satisfied, note that the class of quasi-contractive mappings already contains this kind of mappings. And non-spreading, if this kind of condition holds, so you see, I'm taking you to what I want. Non-spreading, if it has two components, if it has three components, he puts 3 here, so 1/3, 1/3, 1/3 goes to 1, right? Go ahead, please. But you could take, sorry. जैसे contraction है, non-extensive है, वो तो अपने नाम से अंदाजा हो रहा है, contract कर रही है, expand नहीं कर रही. ये non-spreading में क्या है? Spread, contract. Contract versus spread, and non-spread, again, something like that. You see? Hybrid though, okay, just hybrid, because you see, in a contractive mapping, you have only this story. But if you have these two kind of stories, then it becomes hybrid. Because T has also been involved in this. So T is on both sides, on the left and right, both sides, right? So please go ahead. Here is another one, generalized hybrid. So instead of writing the numbers, he now writes general coefficients like this. Again, go ahead. I want to be quick. Go ahead. Just a moment. Okay. Stop, please. Now, with this type of, but please keep in mind, because of this, maybe you are being distracted, but still, keep in mind that we are talking about the mappings, transformations. We are talking right now about different kinds of mappings, because I want to take you to my own class of mappings. So, with this type of mappings, they give a non-linear ergodic theorem and a weak convergence theorem for Mann iteration for fixed points of such mappings. And then they proved a non-linear ergodic theorem without convexity for attractive points. So they dropped convexity and were able to prove, instead of a fixed point theorem, an attractive point theorem. Right? So what about the star shape? Star shape is non-convex, of course. Star shape, convex, and then this attractive. No, these are two different things. Star shaped is an example of non-convex set, right? Or a star. Or they might have some other relations, right? But these are the mappings, they are sets. They are ambient spaces, convex set. We are not talking about convex functions. The question is whether the result you prove can be proved from star shape domains. I didn't try it. Okay. Let us see until the end when an open question comes. The second question is, Please. if instead of Hilbert spaces, we take the norm spaces Only norm spaces. Actually, many results have been proved using different ambient spaces. But there will be definitely. You know, when you change the ambient space, as I told you in the beginning, the things will change. The rules will change. The tools may even cease to exist. basically you are considering the norms only. Norms only. Why not norm spaces? They could be. There have been questions, not only norm spaces, but maybe Banach spaces will be better than norm spaces. They will behave better. And even in cat zero spaces, they have done the results. To begin with, yeah. This is just the beginning.
So I did only maybe couple of papers and then I went offline with this story. चलते जाइए. Wait, please, wait. This is an important thing. जी. जी. तो क्या एग्जाम्पल पहले बनती है और फिर थ्योरी डेवलप होती है कि फर्ज किया कि किसी ने 1/2 के लिए एग्जाम्पल बना ली और फिर देखिए हम इस पे करते हैं या डेफिनेशन ये थ्योरी बाद में होती है या पहले. Sir, this is same discussion as deduction and induction. This is same induction and deduction. This is a way of teaching. For example, this is also a यानी क्या कहना चाहिए उसको जी, आप क्या कहते हैं उसको, टीचिंग स्टाइल में भी ये होता है कि कोई लोग इस तरह इंडक्टिवली टीच करते हैं, कोई डिडक्टिवली टीच करते हैं. कुछ पहले रिजल्ट एग्जांपल शो करते हैं टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट एंड देन बिल्ड अपॉन द थ्योरी ऑन दैट. सम I mean, this is debatable. It is debatable. Yeah. नहीं, मैं जैसे मैं सवाल पूछना चाहता था कि इंट्यूशन जो है वो एग्जाम्पल से आती है. सर मेरे ख्याल में दिस कुड बी एनी वे. पहले आपको इंट्यूशन आ सकती है और फिर आप उसकी एग्जाम्पल बिल्ड कर सकते हैं, या आपके सामने कोई चीज आ जाती है, यू ऑब्जर्व दैट एंड देन यू बिल्ड द थ्योरी अपॉन दैट. So this is both way around. So it depends upon, I think it varies from person to person and not something fixed. So this class of mappings does not contain contractive mappings. So now I am discussing the mapping, so therefore I am telling you the pros and cons are, benefits are, the disadvantages of the mappings. They are very good, but still they don't contain this class of mappings, which is an important task. Please go ahead. Similarly, this class of mappings, चलते जाइए, अब जल्दी से आगे चलते हैं. अच्छा, आगे है सर, इसमें भी है. वो असल में ये वहाँ चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा. असल में एक स्टेप आता आपके सामने. हाँ, ठीक है. ठीक हो गया जी. आगे चलिए. वेट प्लीज. ये अब उसी की चीजें हैं. नाउ एक स्लाइड और आगे जाइए. बस यहां रुक जाइए. ये वही है सर, पूरी स्लाइड है ये. अब so the important thing which I feel like is here, this, and as a matter of fact none of above classes contain the class of quasi-contractive mappings. So again there is a deficiency. Let's go ahead. So wait please. और चलते जाइए. ठीक है, चलते जाइए आगे. पूरी स्लाइड आ जाए तो फिर बात करेंगे. स्टॉप प्लीज, स्टॉप. ठीक है जी. सो दिस, सॉरी, बस रोकिए. वाइडली मोर जनरलाइज्ड हाइब्रिड Kawasaki and Takahashi like this. It's a quite big one, quite complicated one. Now you see, this contains contractive mappings. However, as well as quasi-contractive, on contrary to what we have studied, but not quasi non-expensive mappings. Why I am stressing upon quasi non-expensive mappings? Because they give you the relationship between fixed points and attractive points. So this will be out of question in that sense, right? So go ahead please. चलते जाइए. एक मिनट ठहर जाइए. थोड़ा नीचे आइए. नहीं, पिछली स्लाइड पे चलें.
जी बस आप now you see this term, this is because of this term that you cannot find the quasi non-expansiveness even if it is a fixed point, right? So now go ahead please. So what we do now, the time is to present our own work. So all these type of so many long list of mappings and then another to them. We call them further generalized hybrid mappings, or in short FGH mappings. And I define like this. I remove those last two parts, or the last one part actually of the previous widely more generalized mappings. Now definitely this is the generalization of just last but one normally generalized hybrid mappings when epsilon is 0, that contained only 4 terms. Now we have 5 terms, right? Go ahead please. Just wait. Okay, चलते जाइए बस एक दफा और चलते जाएं. Just stop here please. Now from the previous one, this looks like a special case when xi and eta are 0. However, our class constitutes a simple generalization of this normally generalized hybrid mappings. This contains quasi non-expansive mappings. और पीछे जाएं. बस. This contains quasi-contractive mappings. Thus, our results should be not only general but also simpler. Why simpler? Because we don't have that extra term which was preventing it to make it quasi non-expansive. So we have got rid of that extra term, and on top we have got quasi non-expansiveness, which relates the ideas of fixed point and attractive points. Now this is what I showed actually, that they आगे जाइए जी अब. Just a moment. So this was all about the second part, which was about the transformations or the mappings. The third thing was the iterative processes. Now my friend told you here about the iterative process. That is perhaps the simplest iterative process, which you also study in numerical analysis, successive approximations. You give an input, you apply a transformation, you get an output. You use this output as an input in the next, apply a transformation, you get another output, and so on and so forth. However, all this this iterative process, which is usually known as Pickard iterative process, it is very simple, it is very useful. It has been used in the most celebrated, perhaps most celebrated, one of the most celebrated theorems like Banach contraction principle, yet it does not work for every kind of mappings. So, for example, it doesn't work for non-expansive mappings. So we need to have another iterative process. Another iterative process was found by Mann in 1954, and he used the convex combination of the input and the output, as Professor Mujahid indicated. Right? Now still, again, Mann iterative process fails for pseudo-contractive mappings. So we still have another one, Ishikawa iterative process. Ishikawa iterative process is basically a two-step Mann iterative process. This is Mann iterative process. This is Ishikawa. Mann, hybrid with Mann. Right? However,
this is what I'm telling you, that every iterative process has its own limitations. And if you change the mapping, it may change. The tools may cease to exist even. Right? So please go ahead. Chalte jaiye. Stop, please. So, because as I told you that Ishikawa iterative process is the hybrid of man with itself, man with man. So I thought, why can't we make a hybrid of the simpler process, which is Pickard with man? So that's why I defined this process. And by the grace of God, this paper got a good attention, and it has so many citations. So now what is the use of this process? Why did I, now as Professor said, that how the intuition came? The intuition came from, if there is a hybrid of man with man, why not a hybrid of the Pickard with man? Right? And after this, you can see in the literature that there are now tens of iterative processes using this idea. The idea is same, now the steps change. They increase the number of steps, or they change the mapping. And the idea is essentially the very first time this idea. Right? Okay, next. This appeared first time in 2013. 13. Sorry? Journal Fixed Point Theory and Applications. Yeah. It was a very good journal at that time, and it has an impact factor which I don't believe, although, but people believe, so I'm telling it had 2.58 impact factor at that time. Right? Yeah. चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे करें, नीचे, मैंने ऊपर यानी कि बस. Now you can see that for this process, you cannot get man iterative process from this, nor you can induce this process from man iterative process. However, आगे चलिए, चलते जाइए, अब जल्दी से चलिए. Wait. That process involved only one mapping, that was T, right? But if we use two mappings, if we use two different mappings like this, now you see, if I take this S equal to the identity mapping, then this is nothing but man iterative process. So the use of two mappings, it's not like you just introduce another mapping without having any advantage. So we just didn't introduce a mapping for the sake of mapping. No. We have an advantage of it, that now we can deduce the results done by man iterative process by simply taking S equal to the identity mapping. Right? Ugly slide which challenge. Okay. And of course, because this contains two mappings, so it will give you a common fixed point or a common attractive point. You know, approximating common fixed points has its own importance. Because the time is so short. And basically it has an application in minimization problem. Minimization problem, right? You have convex inequality system. You want to find the solution of that. The application convex minimization problem. You want to solve a convex minimization problem, right? Convex inequality system actually. That inequality system basically you can construct in a way that the mappings are non-expensive mappings, and the iterative process used is man iterative process, for example, right? And then the solution of that system is nothing but the
minimum point, solution of the minimization problem, solution of minimization problem. So a convex inequality system can be converted into a convex minimization problem whose solutions are same through non-expensive mappings and through an iterative process. So this is the importance of that, right? Aage chaliye ji. Now we define common attractive points like this. So मेरा ख्याल है इसको आगे ले चलें अब आखिरी स्टेप पे चलते हैं. So this is a lemma. आगे चलें बस. So here is थोड़ा सा ऊपर करें बस यहाँ तक देखिए. So now this is the relationship between common fixed points and common attractive points here, and this is done for quasi non-expensive mappings. They are very important because quasi non-expensive mappings have a fixed point. They must have a fixed one by definition, right? So therefore we can have this story. Common attractive points of S and T intersection this C, here this portion is nothing but Fs intersection Ft. Right? Aage chaliye ji. So this is the relation which I promised to tell you in the earlier part of my talk. Chalte jaiye. Just a moment. Our next result is on top, cap without any use of closeness and convexity as the Balin did. Right? So here is this. The main theorem is the next one, so go to the next one. Chalte jaiye. Chalte jaye. और आगे चलिए. Stop. So this is our main result. So where we have xn, the xn bounded defined by this, right? This is our process basically, and these are our mappings, right? So xn defined by this converges weakly to a point q in cap st, these mappings. So, and we don't need any closeness, you see. We just took convex subset, non-empty convex subset of H. We don't need any closeness. आगे चलिए. So wait. ये भी उसी तरह का रिजल्ट है. आगे चलें. ये क्रॉलरीज आ गई. आगे चलते जाएं. क्रॉलरीज आई हैं. आगे चलते जाएं. Wait. So generalization to a more modern iterative, as I told you that if you change the iterative process, you will get a new result. Now, based on the previous discussion, we can use this kind of process or any other type of process which you like. Go ahead. Wait, please. So now we pose an open problem that we defined an attractive point like Tx minus Z norm is less than or equal to norm of X minus Z. Is it possible to give a new definition which on right side consists of hybrid terms or something like this? I didn't start work on it. This just came to my mind last night, right? So, or can we generalize in some other way the definition of attractive points? So this is an open problem. If you guys feel like you can work on it. अगली स्टाइल
چلیں جی. These are references. Go ahead, please. Stop. Any questions or comments? جی کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی لاسٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے. جی جی مان اور یہ تو یہی بات ہے نا سر. یہ مان جو ہے نا دیٹ از ون اسٹیپ میتھڈ. کیا ہے جی کیا بالکل. آئیڈیا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سر اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ سے تو کر کیا شیئر کرنا ہے. مان is a one-step iterative process. Ishikawa is a two-step iterative process. There are three-step iterative processes which are used in several applications. In, for example, elastivistoplasty, what that theorem is a little difficult word. I don't remember exactly, right? So, and so on and so forth, you can do them. Yeah, they have done, and there is room. Still there is room to do that. Coincidence points. Maybe you can find a relationship between coincidence points and attractive points. This is what I'm telling you, that first we need to establish a relationship between coincident points and attractive points, like we establish a relationship between fixed points and attractive points. There is already a relationship between coincidence points and attractive points. Coincident points and fixed points. So now you need to complete the triangle. Not directly generalizing or extending or... No, I didn't work on this. Honestly speaking, I just wrote maybe a couple of papers or 3 papers, and then, as I told you, I went offline.